dear student, good morning to all. How are you all? Fine. So my dear student, I am your maths teacher Miss Preeti from Sanskar, the Gurukul International School. So welcome back again our online classes. So my dear student, so before starting our study, be ready for your study materials. Okay. Now open your book. See lesson. What lesson? 7. Open your book, see lesson 7. The topic is addition. You know what is addition? In last class we have discussed about addition table. Understood? In last class we have discussed about what? Addition table. How can read this table, addition table, and how can write in your copy, and how can add both together number, and what will we get the answer. Okay. So all are things of our addition tables. Okay. So my dear student, today we are going to start our new lesson 7. The topic is addition. Okay. So what's the meaning of addition? Let us see. This is the definition of addition. Okay. Addition is bringing two or more numbers. Addition is bringing two or more number or things. Okay, or things together to make a new total. Together to make a new total. एडिशन में हम मोस्टली क्या करते हैं? एडिशन में हम किसी भी चीज को या फिर डिजिट को, दो या उससे भी ज़्यादा डिजिट्स को, या फिर दो या उससे भी ज़्यादा कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी चीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आंसर आती है वो क्या होती है? एडिशन. ठीक है. जो टोटल हमारे पास आंसर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन. ओके. So here is a one example given here in your blackboard. Look at this. What is this? You know all. What is this? This is a figure of what? This is a figure of apple. This is a apple. Okay. How many apple? In upside have a 1, 2, 3. 3 apple. And downside also have a 1, 2, 3. 3 apple. So when we go to add both things, the addition sign is this, plus sign is we have called the addition sign. Okay. So when we go to add both things, both apple, we have get the answer of 3 plus 3 is equal to 6. Okay. So 3 plus 3, we get the answer of 6. Now the addition method, 3 plus 3, 6. Okay. So this is an example of addition. Now see next example. So my dear student, here one more example given here. Example 1. How can add this number? Add 323, 25 and 620. 3 digits given here. Okay. So how can add this? How can all add this number? So when we are going to arrange the number of the place value according to the place value. So the largest number is 620. So we are writing here 620. Then after that we are arranging 325, 23. The last one is 25. Okay. We are going to go to arrange sequence wise. Okay. So at first we have to go to arrange the place value, unit, tens and hundred. Okay. In a unit have a 3 digit and tens have a 3 digit and hundred only have a 2 digit given here. So in units have 2 digit. When we go to add both number, three number, the answer is 5 plus 3 is equal to 5 plus 3 is equal to 5, 6, 7, 8. How many? 8. And 0? Not is number. So we have writing here only 8. Okay. So 2 plus 2 plus 2. 3 times we are going to add 2 plus 2 plus 2. We know that 2 plus 2 is equal to 4. And after 2 plus 2 is equal to what? 6. Okay. So we have the get answer of 6. So we have
Okay, 6 plus 3, we have got the answer of 9. So we have write it here 9. When we go to read number, so we have go to left side, go to the right side. Okay, when we adding the number, we have start from right side and go to the left side. Okay, so read from left to right side. Right side. 968. How many answers? 968. We have get the answer. Okay. When we go to add the number, we have started from right side to go to the left side. Okay. So this is a function of addition. How can read it and how can adding the number. Okay. So my dear student, this is the next step of addition. The properties of addition. What is the properties of addition? The first properties of addition is the sum of the number and 0 is the number itself. The sum of the number and 0 is the number itself. एडिशन के फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो हमारे पास उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट नंबर जो होगा वही हमें मिलेगी. ठीक है. सो हियर इज एग्जांपल 456 प्लस 0. सो व्हाट विल बी द आंसर? 456 प्लस 0 इज इक्वल टू 456. ओके. जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं वही हमारे आंसर में आएंगे. ठीक है. सो 4000 प्लस 0 इज इक्वल टू सिंपली 4000. ओके. नाउ 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7. ओके. 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10. 5 plus 0 is equal to 5. Okay. Now 2 plus 0 is equal to 2. Okay. Understood? So when we go to add the number of 0, we have get the number itself. ठीक है. हमें वही नंबर मिलेगी जो नंबर हमें, जिस नंबर के साथ हमें 0 को ऐड करनी है वही एग्जैक्ट नंबर हमें फाइंड आउट होती है आंसर में. ठीक है. तो सेकंड प्रॉपर्टीज देखिए क्या है एडिशन के. फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपने देख लिया. सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ओके. सो लुक एट हियर. द सम ऑफ एनी 2 or 3 numbers, the sum of any 2 or 3 numbers will not change if the order of the added is changed. If the order at the added is changed. Okay. जब भी हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करके किसी भी डिजिट को जब हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे राइट हैंड साइड वाले डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट को राइट हैंड साइड, ऐसे करके जब भी हम किसी भी डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास वो नंबर कौन सा आता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती है. जो हमारी टोटल नंबर निकलेगी, जो हमारी टोटल आंसर निकलेगी, वही क्या होगी, जो हम चेंज करेंगे जिस नंबर पे, उस नंबर पे भी हमारी क्या होगी, सेम नंबर मिलेगी. ठीक है. सो देखते हैं एग्जांपल 6 plus 5. First example is here of second property. 6 plus 5. What will be the answer? The answer is 11. 6 plus 5 is 11 and 5 plus 6. See, 6 plus 5. At first 6, then after that 5. And here first 5 and then 6. 5 plus 6 is equal to also 11. So answer will be same. Okay. In both number we will get the answer of same. Now see next example. 20 plus 5 plus 10. Okay. 20 plus 5 plus 10. What will be the answer? Answer is 35. 20 plus 10, 30. 30 plus 5, 35. Okay. And then 5 plus 10 plus 20. So also have a 35 answer. We get the answer of 35. So both conditions we have get the same answer. Okay, both conditions we have get the same answer. So this is a call of a second properties of addition. Okay.
So now let us see third properties. What is the third properties? So my dear student, this is the last properties of addition. Okay, let us see what is this? A change in the grouping of the number. A change in the grouping of a numbers to be added does not change the sum of the number. ग्रुपिंग में जब भी हम नंबर को ऐड करते हैं, नंबर को अगर हम एक्सचेंज करते हैं ग्रुप वाइज हम अलग करते हैं, सेम डिजिट अगर हम किसी भी नंबर में ग्रुपिंग में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल सम क्या होंगे, सेम ही आएंगे. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 8 प्लस इन ब्रैकेट 4 प्लस 3, ब्रैकेट में 4 प्लस 3 है एंड ब्रैकेट के बाहर क्या है, 8 प्लस है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है आपको. ऐसे ही ऐड कैसे करोगे आप, तो 8 plus in bracket 4 plus 3. At first you have solved the bracket questions. 4 plus 3 is equal to how many answer? 4 plus 3 is equal to, you have write it here 7, 4, 5, 6 and 7. Okay, 7 we have write it here 7 and 8 plus 8 plus 7. The value of the bracket number is 7. Okay, and 8 plus, ये 8 plus को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसकी जो आंसर निकली ये आंसर को हमने यहाँ लिख दिया. So टोटल जब ऐड करते हैं 8 plus 7 is equal to how many answer? 8 plus 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times we have draw in this trick. So when we go to add 8 plus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we get the answer of 15. Okay. So see next question, 8 plus 4. In bracket have 8 plus 4 plus 3. In out of bracket plus 3 only. So at first we have go to add. At first we have go to solve the bracket questions. 8 plus 4 is equal to how many? 12. Okay. 8 plus 4 is equal to 12 and then plus 3. Plus 3. When we go to add both number, 12 plus 3 is equal to 15. Okay. Same answer. Both sides we have get the same answer. Now third question. 8 plus 3. 8 plus 3. We have solved for bracket questions. 8 plus 3 how many? 11. 11 plus 4. Plus 4. ये वाले 4 को हमने क्या किया? Then 11 plus 4 is equal to 15. Okay. So 15, 15 and 15. We have get all condition we have get the number of 15 only. Okay. किसी भी कंडीशन में अगर सेम डिजिट अगर आपको दिए जा रहे हो, अगर आपको सॉल्व करना है सेम डिजिट किसी भी कंडीशन में हो तो एट फर्स्ट आप ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा. उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के पहले जो नंबर है उसे लेकर के दोनों को आपको ऐड करनी है. ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट तोड़नी है उसके बाद आप सॉल्व कीजिए. ओके. सो किसी भी कंडीशन में हमारे आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ दिस you have solved returning question 1 exercise. In your exercise given a question number 1 is adding the number of carry numbers. Okay, so you have must solve in your homework copy and send me my personal WhatsApp and try to solve the questions of word problem more than questions. Okay, so rest of questions we have solved in next classes. So today till now, bye bye and take care.